कभी आपने नोटिस किया है जब हम टेंशन में होते हैं हमारी ब्रेथ शॉर्ट और फास्ट हो जाती है, इज़न्ट इट? स्ट्रेस की वजह से बॉडी में एक हार्मोन रिलीज होता है जिसे कहते हैं कॉर्टिसोल, और उसे स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। ये हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस माना जाता है, लेकिन इंटरेस्टिंगली सिर्फ डीप और स्लो ब्रीदिंग करने से ये स्ट्रेस कम हो सकता है, कॉर्टिसोल्स का लेवल भी नेचुरली एकदम कम हो जाता है और आप एकदम ही काम, आराम से बहुत ही इजीली अपने स्ट्रेस को हटा सकते हैं, काम फील कर सकते हैं। इसीलिए आज मैं आपको 5 प्रैक्टिकल टेक्निक्स बताऊंगा जो आपको कहीं ना कहीं कॉर्टिसोल को कम करने में, स्ट्रेस को कम करने में बहुत मदद करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। द फर्स्ट इज बॉक्स ब्रीदिंग। हम हर एक्सरसाइज को और हर ब्रीदिंग एक्सरसाइज को 3 मिनट के लिए फॉलो करेंगे। अगर आप प्रेग्नेंट हैं या फिर आपको बीपी का इशू है तो आप इसको थोड़ा आराम से करेंगे या फिर अवॉइड कर सकते हैं। और अगर आपको बॉक्स ब्रीदिंग की पूरी डिटेल वीडियो चाहिए तो आप उसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हैं। अभी आंखें बंद कर लीजिए। बॉक्स ब्रीदिंग के लिए हम सांस लेंगे 4 की गिनती तक, सांस रोक के रखेंगे 4 की गिनती तक, सांस छोड़ेंगे 4 की गिनती तक और फिर से रोकेंगे 4 की गिनती तक। शुरू करते हैं 3 मिनट। ब्रीथ इन 2 3 4, होल्ड 2 3 4, आउट 2 3 4, होल्ड 2 3 4, इन 2 3 4, hold 2 3 4, out 2 3 4, hold 2 3 4, breathe in 2 3 4, hold 2 3 4, out 2 3 4, hold 2 3 4, in 2 3 4, hold 2 3 4, out 2 3 4, hold 2 3 4, in 2 3 4, hold 2 3 4, out 2 3 4, hold 2 3 4, in 2 3 4, hold 2 3 4, out 2 3 4, hold 2 3 4, in 2 3 4, hold 2 3 4, out 2 3 4, hold 2 3 4, in 2 3 4, hold 2 3 4, out 2 3 4, hold 2 3 4, in 2 3 4, hold 2 3 4, out 2 3 4, hold 2 3 4, in 2 3 4, hold 2 3 4, out 2 3 4, hold 2 3 4, in 2 3 4, hold 2 3 4, out 2 3 4, hold 2 3 4. Last round. In 2 3 4, hold 2 3 4, out 2 3 4, hold 2 3 4, and relax. The second breathing that we are going to practice is called Shitali. It is a very cooling breath. ये आपके शरीर में कुछ
गर्माहट है, बहुत गर्मी है, आपको इरिटेशन है, इन्फ्लेमेशन है, उसको कम करने में मदद करता है। जिनको अस्थमा का इशू है, ब्रोंकाइटिस है, उन्हें ये नहीं करना चाहिए। करने का टेक्निक थोड़ा सिंपल है। अगर आपसे टंग रोल हो सकती है तो ऐसे करना है, एंड देन यू हैव टू ब्रीथ इन फ्रॉम द माउथ एंड ब्रीथ आउट फ्रॉम द नोज लाइक दिस, and then slowly breathe out from the nose like this. Now if you find rolling your tongue difficult, you can also do this with touching your teeth like this. And then slowly breathe out from the nose. Continue whatever feels comfortable. Shitali or Shitkari, these are the two things that we can do for the next 2 minutes. Breathe in. And breathe out. Again, breathe in. And breathe out. Breathe in. And breathe out. If you find rolling the tongue difficult, continue with this. And breathe out. Breathe in. And breathe out. Breathe in. And breathe out. One last time, breathe in. And breathe out. And relax. If you feel a little bit of dryness in your mouth, lips or the throat, you can drink some water, sip some water rather. थोड़ा सा पानी पीना है तो पी सकते हैं. Third breathing that we are going to do is called Bhramari Pranayam. इसके लिए आप बहुत ही सिंपल है, नाक से सांस लेंगे and then you make a humming sound like this. Now try keeping your ears closed with your index finger. And we are going to do this 10 times by ourselves. 10 बार करने की कोशिश करना है. Breathe in.
And relax. The fourth breathing that we are going to practice is Nadi Shodan Pranayam. अगर आपका नाक ब्लॉक्ड है और ये नहीं हो पा रहा है तो आप बस नॉर्मल लंबी गहरी सांसें लेते रहे. But for those of us who can, start breathing in from the left side. Breathe out right. Breathe in right. Breathe out left. Breathe in left. Breathe out right. Breathe in right. Breathe out left. Breathe in left. Breathe out right. Breathe in right. Breathe out left. Breathe in left. Breathe out right. Breathe in right. Breathe out left. Breathe in left. Breathe out right. Breathe in right. Breathe out left. And relax. I hope you're already feeling calm. Now, to end with an energizing pranayam, we will do Bastrika. So you sit in Vajrasana if that's possible for you. And then take your loose fist in front of your shoulders. Together for Bastrika, breathe in, out, in, 2, in, 3, in, 4, in, 5, in, 6, in, 7, in, 8, in, 9, in, 10, in, 1, in, 2, in, 3, in, 4, in, 5, in, 6, in, 7, in, 8, in, 9, in, 10, and relax. Round 1, if you did with your eyes open, next round try to do it with your eyes closed. Together for Bastrika, breathe in, out, in, out, in, out, in, out, in, 4, in, 5, in, 6, in, 7, in, 8, in, 9, in, 10, in, 1, in, 2, in, 3, in, 4, in, 5, in, 6, in, 7, in, 8, in, 9, in, 10, and relax.
Third and final round. Take positions again. Together for Bastrika. Breathe in, out, in, 2, in, 3, in, 4, in, 5, in, 6, in, 7, in, 8, in, 9, in, 10, in, 1, in, 2, in, 3, in, 4, in, 5, in, 6, in, 7, in, 8, in, 9, in, 10. Relax. Now if you're sitting in Vajrasan, you can slowly come out and sit in Sukhasana. And let's keep our eyes closed for 15 to 20 seconds. 15-20 सेकेंड अपनी आंखें बंद रखें. Now slowly you can rub your palms and cup your eyes. One more time. And cup your eyes again. One last time. And let go. देखा कितना सिंपल है. अगर आप अपने स्ट्रेस को कम करना चाहते हैं, सिर्फ थोड़ा सा सांसों पे ध्यान देंगे, थोड़ा सा समय निकालेंगे और माइंडफुली, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू बी अ लिटिल मोर माइंडफुल व्हेन यू आर डूइंग द ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस. तो आप अपने आप डिफरेंस फील होगा, इजंट इट? आपका मूड अलग हो जाएगा, एनर्जी लेवल्स अलग हो जाएगी. और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, ताकि आपको ऐसी और सिंपल वंडरफुल एक्सरसाइजेस, हैक्स आप तक हम जल्दी से जल्दी पहुंचा सकें.